Hi, today we are going to talk about interior space planning. A lot of you have heard space planning, right? But maybe in an architectural terms. But is it necessary to go in depth for a space planning and interior designing? Because space planning and interior designing is undermined, right? But in fact, I would rather say it is very much necessary for in high usage areas like kitchen, like bedroom, where we have a multiple function sometimes or sometimes single functions. It is very much critical to do a space planning in an interior designing projects. But a question, how are we going to learn an interior space planning, or from where are we going to learn interior space planning? Today, myself, Amir, right, I'll be your tutor for a space planning, and you can definitely select this course. But wait, what are we going to learn in this course? Let us put aside a course and understand more about a space planning in interior designing projects. The focus is more on aesthetic rather than a space planning. But why do we do a space planning? Because to serve its intended purpose. अगर हम एक बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हैं और उसका एस्थेटिक ही लुक देख रहे हैं और स्पेस प्लानिंग नहीं देख रहे हैं, I'll give you a small example. If your room is for 10 feet by 10 feet, अगर आपका रूम 10 feet by 10 feet का है और उसी बेडरूम में आप 7 by 7 या 6 feet 6 inches by 7 feet का बेड ले रहे हो, तो you ask yourself, is that bed in a proportion? Definitely not, right? Because you focused more on aesthetic rather than a space planning. No doubt आपने शायद कंफर्ट को प्रायोरिटी दी हो, बट कंफर्ट के साथ साथ आपको स्पेस प्लानिंग को भी कंसीडर करना है. लॉट ऑफ टाइम्स अगर आप स्पेस प्लानिंग को कंसिडर करते हो तो डेफिनेटली आपके पूरे इंटीरियर्स का लुक कम्प्लीटली चेंज रहता है. आई विल गिव यू वन मोर स्मॉल एग्जांपल. लेट्स से कि अगर आपकी हाइट, राइट, फ्लोर हाइट फ्रॉम अ फ्लोर टू एन सीलिंग स्लैब अगर वो ज़्यादा होती है, राइट, लेट्स से 14 फीट 15 फीट, तो आप उसको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर सकते हो. द मोर बिग हाइट इट इज़, द मोर बेटर इट लुक्स. हाउ? बिकॉज आप उसको स्पेस प्लानिंग में बहुत अच्छे से कंसिडर करते हो. नाउ आई विल गिव यू वन मोर स्मॉल एग्जांपल. लेट्स से कि आपका साइड टेबल है 2 फीट का और आपने जो हैंगिंग लाइट दी है, राइट, वो 4 फीट की है. नाउ यू कैन योर सेल्फ इमेजिन एंड यू कैन सी अपना फोटो ओवर हियर. डज दिस लुक गुड? डेफिनेटली नॉट. बट हम कैसे एस्थेटिक को, कैसे हमारे स्पेस प्लानिंग को, कैसे कंफर्ट को, कैसे क्लाइंट के एस्थेटिक प्रेफरेंसेस को, बिकॉज नाउ इट्स नॉट मैंडेटरी कि क्लाइंट का एस्थेटिक प्रेफरेंस आपका एस्थेटिक प्रेफरेंस दोनों मैच करें, राइट. बट बीइंग एन इंटीरियर डिज़ाइनर हमें तो उन दोनों को मैच करने के साथ साथ स्पेस प्लानिंग को भी कंसिडर करना है. अग्री? अगर हम स्पेस प्लानिंग करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पता होना चाहिए, राइट. व्हाट शुड वी नो टू नो द स्पेस प्लानिंग, राइट. वी शुड नो द स्टैंडर्ड्स. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय स्टैंडर्ड्स? Standard size of bed, standard size of a coffee table, standard size of all the furniture equipments. Because until and unless you don't know the standards, how are you going to play with the designs? Definitely हम इस workshop में सारे standards को revise करेंगे. But how do we reach to a point where we think कि ये aesthetic look भी prefer हो जाएगा, यहाँ पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाएगी, यहाँ पर क्लाइंट का प्रेफरेंस भी कंप्लीट हो जाएगा? हाउ डू वी रीच टू दैट पॉइंट? बिकॉज आप तभी उस पॉइंट पे रीच कर सकते हो जब आपके पास एक रिक्वायरमेंट की लिस्ट हो. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिक्वायरमेंट लिस्ट? वेयर यू नो व्हाट डज योर क्लाइंट वांटेड. If you don't know what your client wants, how are you going to enrich those needs? How are you going to fulfill those aesthetic and the requirement list? So the first basic point to complete the space planning process is understanding the client's requirement. Now, what does an interior designer do? Interior designer का job क्या है? You would rather say it's about designing the walls, it's about designing the ceilings, it's about designing a furniture, right? No, I would rather say interior designer वो है जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, राइट. प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है? लेट्स से अगर आपका क्लाइंट है, अगर वो डिज़ाइनिंग पार्ट से नहीं हैप्पी है या उसकी कंफर्ट से नहीं हैप्पी है या स्टोरेज से नहीं हैप्पी है, तो आप उसके प्रॉब्लम्स की लिस्ट को बना के उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हो. एंड दैट्स वेयर द इंटीरियर डिज़ाइनर्स कम्स इन, राइट. वंस यू अंडरस्टैंड कि उसको प्रॉब्लम क्या है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना और फिर स्पेस प्लानिंग को कंसीडर करते हुए टुगेदर विद दैट व्हेन यू go ahead with an aesthetic look, that's where the space planning comes. But is space planning really just about the furnitures?
डेफिनेटली नॉट. स्पेस प्लानिंग में सर्कुलेशन पैटर्न्स है, प्लेसमेंट्स ऑफ फर्नीचर है, उनके स्टैंडर्ड्स है, एलिवेशनल स्टैंडर्ड्स है, all of things get included when you learn space planning. हमने colleges के time पे all of you probably, if not if you're new, तो आप एक bubble diagram बनाते हो. How do you do a bubble diagram, right? You create an uneven shapes to understand the circulation pattern, right? Because if you know how to make a bubble diagram, आपने step 1 को complete कर लिया है. But अगर आपको dimension कैसे करना है, अगर वही नहीं पता है, standards ही नहीं पता है, if I'll ask you a basic question कि सेंटर टेबल होता है उसकी हाइट कितनी है, राइट, और बेड के साइड टेबल की हाइट कितनी है, देन डेफिनेटली यू माइट हैव टू गूगल इट आउट और यू माइट हैव टू थिंक यार कितना होना चाहिए. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. नाउ दिस आर द वेरी बेसिक स्टैंडर्ड्स. वी हैव टू लर्न अ स्पेस प्लानिंग एंड ऑल दिस स्टैंडर्ड्स इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दैट इन अ प्रॉपर वे. वंस यू नो हाउ द बबल डायग्राम इज बीन मेड, फिर उसके अंदर फर्नीचर्स को सेट करना, प्रपोर्शन में सेट करना, डिमेंशन में सेट करना, राइट. प्रपोर्शन में ऐसे सेट करना कि आपकी एक विजन हो. डेफिनेटली इट्स अबाउट द विजन, राइट, बट वंस यू नो हाउ यू वांट योर स्पेस टू बी डिज़ाइन, देन डेफिनेटली कम्स अ विजन. और जब आप विजन क्रिएट करते हो तो आप एक स्पेसिफिक आइडिया क्रिएट करते हो कि मुझे मिनिमलिस्टिक पे जाना है, मुझे ट्रेडिशनल पे जाना है, बिकॉज बोथ द थीम्स स्पीक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. I'll give you one example. Minimalistic theme says that your furnitures should be very minimum, only and only essential, whereas traditional you tend to fill up those spaces. So if you know which vision are you going to follow, then probably your space planning will get much better. So in this workshop you'll be learning a space planning in detail with an examples of a residential area, with an example of a commercial area. I'll give you one small example how much space planning would matter. Have you ever tried designing a restaurant? If yes, definitely one point to be considered, that the most important aspect, right, in terms of you for your client, is that you need to give maximum number of people, right, the seat occupancy. Why is that important? Because that's where the profit generation, the revenue of your client depends upon. If you design a restaurant for an 80 people, right, the revenue generated will be according to an 80 people. But whereas if you design according to 100 people in the same space without a congestion, right, with an available proper space planning, then with those 20 extra seats your client can get benefit for that revenue. But how? One small trick, I'll show you that. See, on the screen you can see there are two types of table, right, and this is a minimum requirement. As you can see on the screen, first try to understand a minimum requirements of a restaurant table. Now if you push a chair, how much you need? Can you see the arrow on the screen? This is the measurement that you need when you push a chair back. Now let's understand an example too. If I put one side bench and one side chair as given in a diagram on your screen, for each bench you end up saving this many inches what you see on the screen. Now think, if you have consistent 10 tables in a row, calculate it how much inches you can save, and upon that inches you can definitely add up one table as you can see in the diagram. So if you have same 3 rows, so you can add up 3 tables more. 3 tables, that means you add up 12 people more capacity. How? That's how you generated in more profit for your client. This was a very simple trick you have seen. I hope you can understand through diagrams. This is a very simple trick, but one element of a space planning can completely change your plan and add it to a capacity. That's why I say a space planning is really important. There are definitely a lot of hacks that you can use in interior designing. There are a lot of hacks you can use in a space planning, right? But where are you going to learn? Definitely with me. You can join my workshop Interior Space Planning on www.ideasuran.com. I'll definitely keep coming with more such detailed presentations. Thank you.